Hey, do you want to increase your focus? Serotonin. Now you must be thinking that what is this serotonin? Actually, serotonin is a key chemical that affects every part of your body. It plays a huge role in our bodily functions. So when you lose your focus, there is big chance that your serotonin activity is low. And that's why you are giving into short-term pleasures like going out, playing, dating, watching TV, Netflix, Amazon, etc. that gives you short-time pleasure. So to increase your focus and boost your serotonin activity, all you have to do is to do these two things what I'm going to tell you in this video. Number 1, doing physical exercise. आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं या जो एथलीट्स होते हैं वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, दैट्स वाई उनका जो फोकस लेवल होता है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। अब आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो आलसी होंगे और फिजिकल एक्सरसाइज तो नहीं कर पाएंगे। उनके लिए पॉइंट नंबर 2, डूइंग माइंड एक्सरसाइज। एक्चुअली जो फिजिकल एक्सरसाइज है और मेंटल एक्सरसाइज है ये दोनों बराबर हेल्प करती हैं आपके फोकस को इंप्रूव करने के लिए। बट इफ यू आर विलिंग टू इंक्रीज योर फोकस डूइंग माइंड एक्सरसाइज, all you have to do is to remember some positive events of your life. So this simple act increases serotonin production in the anterior cingulate cortex, which is the region just behind your prefrontal cortex that controls your attention. So when serotonin goes up, your focus goes up. I know this sounds cheesy, but when something is wrong, you must fix it. So focus on your life and do things that matters to you and don't get distracted. Stay on the path. Good luck.